अब हमारे पास conceptual questions. Conceptual question. First है, a bucket is taken to the bottom of the well. Does the bucket possess any potential energy? ऐसा बर्तन जिसके अंदर पानी आ सके, जिसमें पानी भर सके, जब भी आप उसको पानी के अंदर डिप करते हैं, then we have to do work on that pot, maybe bucket, maybe another pot, against the upward thrust of the waters. Same is the case of bucket also. Okay, question number 1. We know that whenever we try to dip, whenever की बजाय when we know that when we try to dip the bucket into the water, we have to do work against the upward thrust of the water. This work done will be stored in the form of potential energy, because when we make it free, it moves up against the force of gravity. That is, bucket is capable to do work against the force of gravity. This is possible only empty bucket. छोड़ें इस बात को, वैसे ज़बानी बता देता हूँ कि ये सब कुछ कब तक पॉसिबल रहेगा, जब तक बकेट के अंदर पानी नहीं जाता। तो जो ही बकेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, जब वो भर जाती है तो वो खुद ब खुद बैठ जाती है नीचे, और वो वाली जो अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से जो एनर्जी बनी वो ज़ीरो हो जाती है। हाँ, अब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, लेकिन ये जो एनर्जी जिसको हमने बिकॉज ऑफ द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द वाटर कहा, ये एनर्जी जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, when an arrow is shot from its bow, it has kinetic energy. From where does it gets the kinetic energy? क्वेश्चन नंबर 2 है, तीर कमान की बात हो रही है। When the arrow is placed in the bow and then we stretch it, that is, we do work against the elastic restoring force, and that work done will be stored in the form of elastic potential energy, and when that is set free, then that elastic potential energy change into the kinetic energy of the arrow. When arrow is placed in the bow and we stretch it, that is, we do work against the elastic restoring force. This work done will be stored in the form of elastic potential energy. When we release it, then this elastic potential energy changes into the kinetic energy of the. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3. Does the hydrogen balloon possesses any potential energy? Explain. A balloon filled with hydrogen gas possesses potential energy, because when we make it free, when we release the balloon fly upward direction, that is, balloon is capable to do work against the force of gravity, that is, it possesses potential energy. It possesses potential energy. Next question number 4. Question number 4. Is kinetic energy a vector's quantity? No. Kinetic energy is a scalar quantity, because energy of any form is equal to the work done, which is a scalar quantity. Another reason, kinetic energy is half m v square is equal to half m v dot v.
वेलोसिटी वैसे तो वेक्टर्स क्वांटिटी है और इसी वजह से उसने कंफ्यूज करने के लिए सवाल बनाया हुआ है, लेकिन किसी भी वेक्टर्स का जो स्क्वायर होता है वो डॉट प्रोडक्ट से लिया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट v डॉट v काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर। इसके बाद हाँ जवाब, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना हाल सुना। मैं अभी तो कॉलेज में हूँ, तू किधर है? हाँ हाँ अच्छा चलो जी बात करते हैं, ठीक है। चलो वो तो बाद में होगी ना बात, चले। असल में मैंने देखा था कि वो जो उसके बच्चे हैं ना वो उसको थोड़ा इनकारी हैं कि यार ये अब ख़त्म, ये ज़मीन ना बेचे। बहरहाल फिर भी मैं उसको कहता हूँ, हाँ देखता हूँ, देखते हैं, कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ 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 ठीक हो गया, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट इनटू द टारगेट? व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड it possess kinetic energy. If it penetrate into the target, it has to do work against the retarding force. It has to do work against the retarding force. So the kinetic energy, kinetic energy of the bullet is used to do work against the retarding force. Question number 6. Does the tension in the string of the swinging pendulum do any work? ये डायग्राम बनाते हैं और ये टेंशन, ये वेट, और जब हम इसको किसी एंगल पे डिस्प्लेस कर देते हैं तो टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी। तो इन केस ऑफ पेंडुलम, टेंशन इन द स्ट्रिंग मेक्स 90 डिग्री angle with the displacement of the bob. Since work F dot D, T dot D is T D cos 90 is equal to 0. तो ये जो वर्क डन होगा हमेशा ही 0 होगा, that is work done by the tension, work done by the tension. Rahman Rahim. We know that when a pendulum oscillates as shown, the angle theta between the tension along the string and displacement of the bob is 90 degree. Since work is the dot product of the force and displacement, when we solve it we get f d cos theta, theta is 90 and cos 90 0, so work done is 0. So the work done by the tension is always 0, that is work done by the tension in the string, the pendulum is 0. ये है क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 परफॉर्म करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज, मैं पढ़ता हूँ पहले इसको. A meteor when enters into the earth atmosphere burns. What happened to its energy? Meteor, shahab saqib. Meteor means shahab saqib. We know that when meteor lives in space, because there is no friction, then that's why it can live forever. But as soon as it enters into the atmosphere with very high speed,
it faces a very high friction. Where there is friction, there is heating. Because of this fact, meteor burns, its kinetic energy is converted into heat. Question number 8. Question है, what type of energy is stored in the spring of the watch? Spring is an elastic body. Whenever we stretch or compress, when we stretch or compress a spring, we do work against the elastic restoring force. This work done will be stored in the form of elastic potential energy. फ्रिक्शंस को छोड़कर बाकी जिस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक फोर्स है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 9 और क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 है कि a man drops a cup from the certain height which breaks into the pieces. What energy changes are involved? When a man holds the cup at certain height, the cup possesses gravitational potential energy. When the man releases it, the cup falls under the action of gravity. According to the law of conservation of energy, loss of potential is equal to gain in kinetics. So when the cup strikes the ground with maximum kinetic energy, then this energy is used to break the cup. Sound and heat is produced also. Now, question number 10. A man rowing boats upstream is at rest with respect to the shore. Is he doing work? A man rowing boat upstream is at rest with respect to the shore. Is he doing work? We know that work done बराबर है force into displacement. The man is exerting force on the boat but along against the flow of water, but displacement with respect to the shore is 0. That's why work done by the man is 0. Next question number 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 है कि why energy saver are used instead of the normal bulb. नॉर्मल बल्ब में फिलामेंट होता है जिससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन एनर्जी सेवर में सिर्फ लाइट प्रोड्यूस होती है. इन केस ऑफ बल्ब, फिलामेंट इज यूज्ड फॉर इट्स वर्किंग. सो लाइट एज वेल एज heat is produced during its working, but in case of energy saver only light is produced, that is heat losses are negligible. That's why energy saver is better to use in daily life.